Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम की मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू ओरिएंटेशन जो सेशन होते हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो आप रियलिटी के अंदर किसी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ पर आप उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स को भी देखते हैं कि कहाँ पर उस कैंडिडेट ने गलती की है, कहाँ पर उस कैंडिडेट का जवाब अच्छा रहा है। तो बोनाफाइड पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप सभी लॉ एस्पिरेंट के बेनिफिट के लिए ये वीडियो अभी आपके सामने स्ट्रीम होने वाला है। लेकिन इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ कि आप पेपर और पेन लेकर जरूर बैठें और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको सीखनी चाहिए, आपको रेक्टिफाई करनी चाहिए खुद के केस में, उनको नोट डाउन ज़रूर करें ताकि लिंकिंग लॉस का ये जो पर्पस है वो अपने आप में फुलफिल हो सके। आई होप आप इस वीडियो को जो है बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो लेट स्टार्ट दिस स्पेसिफिक इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। First of all, why you decided to go out for judiciary? Well, why do you think that your personality is suitable for judiciary only, not than any other things? Absolutely, sir. Thank you so much for explaining me why I should join the judiciary. There are a couple of reasons where I should join the judiciaries. First, I have a good decisions-making power, and therefore I wish to contribute in the reforming the judiciary system. And another is quite bit, little bit personal to me, where I am practicing the Panchshila in my personal life. So I have found that the judiciary is the only place where can, without contradicting or compromising my Panchshila, I could perform my duty well in the judiciary system, sir. What is that Panchshila? Sure, sir. Since I am a regular meditator, I used to practice the Panchshila. That's abstain from killing the live being, abstain from stealing, abstain to lie, and abstain to sexual misconduct, and abstain to intoxications drinking. So that five Panchshila can also be maintained in UPSC, civil services as well as. So we can't say that they are exclusive for judiciary only. Your Panchshila can be maintained anywhere else, right? Absolutely, sir. But I have observed in my opinion that while for the other services cadre, where I have somewhere had to compromising my principle of the my work and my productivity would be affected for the outer influences, where the judiciary is the system where I have uphold the truth, and within the truth, so I can be do my duty better in the judiciary system other than the other cadre as well, sir. Have you heard the head and rule of interpretation? Sorry, could you please come again, sir? Head and rule of interpretation. No, sir. Sorry. Mischief rule is also known as mischief rule. Okay, sir. I'm extremely sorry. I couldn't. I'm explaining you. Yes, sir. Head and rule is saying that if there is any error, ambiguity in the existing law, Yes. and if no one has been replaced the existing one, then that law need to be interpreted in this context. Okay. Right? Yes. So, are you aligned with this statement? I have no any idea with regards to that, sir. Particular concern. Okay, fine. Let me put the situation in your life. Yes, sir. Earlier, you mentioned that you will reform the judicial system Yes, sir. because of your good decision making. Yes, sir. So, should I take it or should I presume it that you believe that there exists certain lacuna in the current judicial system which you want to reform? Information comes when there are lacunas. Absolutely, sir. Hmm. Absolutely, sir. If I would be given an opportunity, there are scope for the reformation in judiciary with regards to the service on summons, right? Where also there are the some of the accused who might be have avoiding themselves to service the summons
and again for the another offense they are come for the bail in the any other matters, right? Where in their cases that could be the better position if we allied them for the any antecedents are against the accused at that present. And if we like, and I would refer to the example of the civil record, sir. Like any bank, if I would to go to bank for the loan, bank will check all the my creditable history, right? So in that case, sir, if we align the Aadhaar card with the particular accused or somewhere, so we can easily identify whether that accused has already been charged in another matters, whether he is refusing in another summons, and at the time when he is appear for another matter where for the bail, right? So immediately the service of summons could be issued at the particular contest as well, sir. For that purpose, you need to make amendment in the law, correct? Absolutely. You are talking about that accused person who is already charged and earlier also absconded the summon or had disobeyed the summon. So next time we should not send him summon in any another case. We should directly give arrest warrant. Why sending someone to a person who already disobeyed? So somewhere you are saying that if a person have any such antecedent, in that case we should not waste time of judiciary in sending someone. So in this particular you need a reformation. So reformation will be done by here in this case by amending the law. Said the provision under section 61 and 62 regarding in this regards that for such kind of person who disobeyed earlier, there is no need for someone by the search warrant, by the arrest warrant will be issued. But amendment can be done by legislative, not by judiciary. Then how can you reform it? Sir, with regards to the amendment, I am more precise on the process of the service of the summonses, where already the accused have the antecedents and he is absconded from other matters. And again, for any other offenses, he appear for the bail before that, right? So before granting the bail, it would be the more easy if we could track whether he has an antecedents and at what stage matter has been running or pending before him against earlier. So at the time when he appear for the bailable offense, right, or the bail, right, at that time we could be even serve that summons. So the matter which are lingering for the service of summons or absconding from other matters would be easily move ahead for the next steps, sir. Okay. Preventing measures, are you aware what are preventing measures in CRPC? I'm sorry, sir. I could not recall it this time, sir. It's fine. Preventing measure to prevent any offense to be committed. Yes, sir. Right. So preventing measures are generally performed by executive magistrate and police. Yes, sir. There are any provision in CRPC where the judicial officer can exercise such preventing power. I'm sorry, sir. I not recalling it. It's okay. Under maintenance provision, Ji, sir. whether a married daughter is liable to maintain her biological parents. Sir, as far as the married daughter, there is no such a specific provisions are mentioned to maintain his biological parents, sir. Only the father of is been has defined in the sections 125 of the CRPC. Okay. Inherent power. What about this word, inherent power? Inherent power, yes, sir. What are the relevant provisions under Constitution, CRPC, and CPC in this regards? Sir, with regards to the inherent power of the High Court and various different courts, under sections 482 under the CRPC has been mentioned, and under the sections 151 of the CPC it is been mentioned with regards to the inherent power of the particular courts to take the any decisions which is convenient for the interest of the justice. And with regards to the Constitution, sir, I'm real sorry I couldn't able to recall at this. Yes, just now you were talking about punch shield principle, right? Yes, ma'am. Do we have any case law punch shield principles in Evidence Act?
Panchshila, I am not Any any. case law which gave Panchsheel? No, ma'am. As far as my Panchsheel is concerned, right? The legal fraternity or the legal laws are defined in a way to allow me to maintain my Panchshila, right? Like in the terms of, I would say, in the civil natures of kind, there is in contract there is a bailment of the consent. If I forget something at that house, right, or someone else for giving the any matter, so he has duty to return to me, right? So similarly in the criminal side, if we can say that the person is only guilty when his mind or intentions to make that a crime, right? Until and unless he is not guilty, if he is by mistakenly or the any necessity arise, right? So in that way, I have to perform my duty within the range of this Panchshila. What do you know about precepts in CPC? I'm sorry, madam, I couldn't recall at this. What is state animal of Gujarat? Sorry, could you please come again? State animal of Gujarat. State animal. Yes. Lion, ma'am. Okay. कौन सी लायन की जो ब्रीड है जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट में मिलती है? I'm sorry, madam, I'm not aware about that. अच्छा. इंडस वैली सिविलाइजेशन के गुजरात में I'm sorry, madam, I am not aware about. name any two, if you know. No, madam, I couldn't recall at this. Okay. Do you know anything about prospective overruling doctrine? No, madam, I'm not aware about. What was the source of inspiration in your life? Sir, with regards to my every time I for the judiciary or in particular life, are you asking, sir? In your life, particular life. Sir, there are many sources with regards to the Swami Vivekananda, which I would refer to be the idol for me, and Gautam Buddha, where I can inspire my life to for living the better way in the being a better human being in the planet. लिंकिंग लॉस एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके स्टेट जुडिशरी के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी टीम के साथ एफर्ट करती है। यहाँ हम लोग लिंकिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक है, इंटरसेक्शन लिंकिंग, इंटर चैप्टर लिंकिंग, इंटर बेरेक्ट लिंकिंग, साथ ही साथ में किसी भी सेक्शंस का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए उनके डायग्रामेटिक नोट्स बनाना और नोट्स के जरिए लिंकिंग चार्ट्स के साथ में मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉडर्न टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कोर्स को ऑनलाइन सब्सक्राइब करते समय। पहला ऑप्शन आइकॉनिक, जहां पर आपको 4 एडिशनल फीचर मिलती है। पहली फीचर जहां पर आपको 1-to-1 मेंटोर होगा जो आपको गाइडेंस देगा स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली। साथ ही साथ में आपकी जो मेंस टेस्ट सीरीज होगी मेंस एग्जाम की, वहां पर आपकी कॉपी 1-to-1 चेक करके इवेल्युएट की जाएगी। जितने भी मॉक इंटरव्यूज किसी भी स्टेट जुडिशरी के होते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के या अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स के, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे एक्सक्लूसिवली और डाउट सेशन के अंदर प्रायोरिटी। ये 4 स्पेसिफिक फीचर आइकॉनिक में है और इसी के अंदर शामिल होता है प्लस कोर्स, और प्लस कोर्स आपको अलग से भी अवेलेबल होगा। प्लस कोर्स के अंदर जो है आप कंप्लीट क्लासेस देख पाएंगे और कोर्स वाइज नहीं, ये यहां पर आपको ये चीज मिलेगी वैलिडिटी वाइज। एग्जाम्पल, आपने 1 साल का अगर कोर्स सब्सक्राइब किया है तो 1 साल की वैलिडिटी के अंदर जो भी सेगमेंट डील किए जाएंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, उन सभी का आपको एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप जुडिशियल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय आप लिंकिंग कोड LINKING लिंकिंग कोड के साथ ही जुड़े, ताकि हमारी टीम आपको अनस्टॉपेबल सपोर्ट जो है देती रहे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके गोल ऑप्शन में जाए, जुडिशरी को सेलेक्ट करें और वहाँ पर प्लस और आइकॉनिक में से जो भी वैलिडिटी पीरियड आपको चूज़ करना है उसको चूज़ कीजिए। एंड देन आफ्टर नीचे एक गिफ्ट टाइप का आइकन ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आप लिंकिंग कोड अप्लाई करते जो भी एप्रोप्रिएट डिस्काउंट होगा वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन विथ लिंकिंग लॉस। Swami Vivekananda has done marriage in his life. Yes or no? Yes. Sorry, come again. What? Marriage? Yes. No, he didn't marry. Buddhism, what about? Sorry, come again, sir. Buddhism. Buddhism. Currently, it's a practice is going on Yes, sir. that a member of SC/ST Okay. is converting himself to Buddhism. Okay. Okay. So don't you think that such conversion is against the basic principle of the Constitution? Sir, it is an right of the particular person if he wish to willingly convert himself for the other religions, right? So our constitution is allow them, but if it is enforced, right, or by the coercions, right, and absolutely it is an against the human right, and it is an violating the their Right to convert the religion is a fundamental right. no, right to convert is not, but if I willing, then it is my right, otherwise not. Okay, sir. It was okay, not above average. Yes, sir. Divyakant Pandya ji, I am impressed the way in which you start, the way in which you deliver your statement, the way in which you react for any particular action. But at the same time, I am disappointed with your few gestures. Yes, sir, please. Number one, first gestures, you initially insist on this word punchil. You mentioned it twice or thrice. But when I came to know from you what are the punchil, then at that time I found that you stuck a particular point of time. है? अगर आप किसी चीज को अपने कोर सोल से फॉलो करते हो तो आप उसके प्रिंसिपल्स को नहीं भूल सकते, जी सर, है ना? तो अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। जी सर, मेरा अंग्रेजी में था तो इसीलिए थोड़ा वो वर्ड का मेरे को कंसेप्ट, बाकी अगर मैं गुजराती तो आप देखो, आप सुनो मेरी बात सुने, आप इसको अगर गुजराती में भी बता सकते थे, अच्छा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोगों को दोनों लैंग्वेज की इजाजत है। ओके, जी सर, तो आप इसको बकायदा उसके एंगल से बता सकते हैं, पंच सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू को। फर्स्ट थिंग, मतलब आपको पांचों वर्ड्स जो पता होने चाहिए, जी सर, ठीक। अब आपने स्टार्टिंग इंग्लिश से किया तो आपसे इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन रखेंगे, है ना? जी सर, एक और ध्यान रखें, कम अगेन, ये अंग्रेजी के बोलने के, इंग्लिश स्पीकिंग का एक तरीका होता है, लेकिन जब आप अपने हायर डिग्निटी के सामने बात कर रहे हो तो इस कम अगेन वर्ड को इस्तेमाल करते समय या तो इसके पहले कर्टसी का वर्ड प्रीफिक्स करें, सर वुड यू माइंड प्लीज कम अगेन, ओके, या प्लीज कम अगेन, डायरेक्टली कम अगेन, ये एक हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी के बीच में होता है। कमिट करना और मेक ओवर करना, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कम अगेन जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड यूज करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना? आपने किसी हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा, इसको बोलने के लिए, रिपीट करवाने के लिए वहां पर ये ध्यान रखेंगे। आपके एक एग्जाम्पल से मैं इम्प्रेस हुआ और आपके एक एग्जाम्पल से मैं डिप्रेस भी हुआ। ओके सर, पहले नेगेटिव बात पहले बताऊंगा। आपने कहा कि यू विल रिफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम, जी सर, ओके, इस वर्ड को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जी, आप उसमें ये कहिए, सर आई वुड लाइक टू contribute myself to the judicial system and suddenly sir for the speedy justice, for the justice to the poor person, I think my soul, my personal, my perception, my persona can know better. ओके इतना बात, क्योंकि रिफॉर्म करने के लिए जो आपने एग्जांपल दिया वो रिफॉर्म आप जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, यू आर अबाइड बाय नाउ, या आप हमको हाईकोर्ट की देखने बन रहे हो तो क्या आप इंटरप्रिटेशन कर पाओगे वगैरह वगैरह। जी, और अगर आप यहाँ पर लॉ बाय जजेस की बात अगर आप कर रहे हो, लॉ बाय जजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ बाय जजमेंट,
जी तो सर। उस केस में इसको ऐड ऑन करो कि सर कि अगर किसी ऊपरी फ्लोर पे जाने के लिए कहीं की सीढ़ी की शुरुआत होती है। जैसे मेरा ही मानना है कि मेरी जो एज है उसके अकॉर्डिंग शायद 30 ईयर्स तक मैं अगर मैं हाईकोर्ट के जज की पोस्ट तक पहुंच पाता तो शायद कॉम्पिटेंसी के अंदर मेरा संविधान जो है मुझे इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति दे सकेगा। और उस समय शायद अगर कोई अप्रोप्रिएट केस आता है तो शायद मैं ये बात जरूर रिफॉर्म में रखना चाहूंगा कि ऐसे केस में समन नमन जो है वापस रीसमन नहीं करना चाहिए, जो पर्सन है वगैरह वगैरह एड ऑन करो। अदरवाइज बेटर है अवॉइड करो या फिर क्या करो, उसको थोड़ा वर्डिंग चेंज करो। ठीक है, तो रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम मतलब आप उसके अंदर लैक्यूनास को देख रहे हो। लैक्यूना देखना गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में या तो पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप इंप्रूव कर सको, आपकी कैपेबिलिटी में होना चाहिए। एक बार जब आपसे वर्ड यूज किया बोर्ड लर्न, तो आपने मुझे करेक्ट किया, वहां पर आपने वर्ड यूज किया बुद्ध धर्म, मतलब आपने इमीडिएटली बोर्ड की जगह बुद्ध बोला, जबकि आप गलत बोल रहे थे। ओके, है ना, बौद्ध धर्म कभी नहीं होता है, बौद्ध धर्म होता है। बहुत है ना, आपका जो संस्कृत का श्लोका है वो उसका है बुद्धम धर्मम गच्छामि, वो एक अलग चीज हो जाता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द संस्कृत। जी सर, जी सर। तो शब्द क्या है, शब्द तो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म, है ना। यस सर। तो आपने वहां पे मुझे करेक्ट किया, करेक्ट नहीं किया, एक्चुअली आप इनकरेक्ट ओपिनियन दे रहे थे। ओह आई एम सॉरी। टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट, जानबूझ के अपनी गलती हमें सामने वाले के सामने नहीं करना। एक बात मैं सभी को कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप एक बैट्समैन है और आपके सामने 6 बॉलें फेंकी जा रही है तो सारी बॉल पे आप बाउंड्री नहीं लगा सकते। एक या 2 बॉल आपको ऐसी मिलेगी जहां पर आप बाउंड्री लगा सकते हो, मतलब सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। आपको पता है जब राइट टू कन्वर्जन वाली बात आई थी तो वो आपके सामने वो बॉल थी जहां पर आप इम्प्रेस कर सकते थे। कैसे? अगर आपकी जगह पर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से होता कि सर नो डाउट that right to conscience is enshrined in the constitution itself by virtue of article 25. Article 25 clearly allow any person to convey, to console any religion whichever he find appropriate. So if we think in broad sense, then I personally believe that if you want to convert your faith, then it is a kind of concise your faith. So I believe, in my opinion, yes, it is permissible. यहाँ पर आपका आंसर है, आपने पहले यस बोला, फिर वापस बोला कि नहीं फंडामेंटल राइट तो नहीं है सर वगैरह वगैरह, तो आपने आर्टिकल 25 का जिक्र ही नहीं किया। क्योंकि वहां पे राइट टू कंसेंस का पॉइंट आता है, वो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। तो कॉन्सेप्ट वहां से अराइज जो होता है। सेकंड चीज, वर्ड सिलेक्शन में आप बार बार एक वर्ड पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ये आपका एक ऐसा लग रहा है मुझे तकिया कलाम टाइप का वर्ड है। कई जगह पर मैंने नोटिस किया, जैसे कि आप बता रहे हो आर्टिकल सेक्शन 151 सीपीसी, आपने कहा कि सर पर्टिकुलर कोड एक और एक्सेस कर सकता है। पर्टिकुलर कोड कौन सा? यहाँ पे पर्टिकुलर कोड का मतलब होगा सिविल कोड एक्सेस कर सकता है, सिविल कोड थोड़ा ना कर सकता है। दूसरा, आपने 482 का बताते बताते आप लोग जो है आपने वहां पे सिविल कोड वर्ड भी यूज कर दिया। 482 इज ओनली अबाउट द हाई कोर्ट सर जी। वहां पे सिर्फ हाई कोर्ट तो कंफर्म करना चाहिए था। तो वर्ड सिलेक्शन थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आती है सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर आर्टिकल 142, ये चीजें क्या होती है आपस में कनेक्ट होती है, लिंक होती है। जी सर, बराबर। तो वो पॉइंट जो आपने लिंकिंग थी वो मुझे वहां पर थोड़ा मिसिंग लगा, और लिंकिंग के कारण आपका जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर रहा। ओके, आप क्या सेल्फ स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं, क्या करते हैं आप? सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी, दैट्स अ गुड थिंग। यूट्यूब पे लेक्चर भी देखा करते हो आप? हाँ, यूट्यूब पर सर आपका लेक्चर वगैरह जो रिविजन्स रहता है वो सब में रहता हूँ सर। क्या करते हो ना, आपका मोबाइल इंटरव्यू का डेट कब का है? 8 October. 8 November, 8 October. When you have sufficient time, Absolutely. 10 to 12 days. First of all, watch this video twice. Along with that, you need to revise your concept. You need to revise CRPC, IPC, Constitution, Indian Evidence Act, okay, and other manual which are to be especially contact law, etc. तो जो यूट्यूब पे क्लास वगैरह जो अपना बड़ा है 3-3 घंटे 4-4 घंटे वाला, उसको देख के एक बार अपना मेजर और रिकॉल करो, ओके, क्योंकि वहां पर एरर चाहिए। गुड कमांड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, वहां पे एरर है जो हमको नहीं चाहिए। एरर और क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे कई बार रह जाते हैं। सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सांप्रदायिक सर। सेक्युलर का मतलब सांप्रदायिक होता है, तो फिर क्रिमिनल का मतलब क्या होगा? यू हैव डन सेल्फ स्टडी, इसका आपको कोई अलग से पॉइंट नहीं मिलने वाला है, रिमेंबर दिस एस्पेक्ट। इसलिए इन 14 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। सेक्युलर का मतलब होता है इंडिया हैज मोर रिलीजन। ओके, मोर रिलीजन।
इंडिया हैज नो रिलीजन. Right. जब इंडिया हैज नो रिलीजन तो क्या ये कहना सही है कि इंडियन हैज नो रिलीजन? कह सकते हो. तो इंडिया है सेक्युलर बट इंडियंस आर नॉट सेक्युलर. तो क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने जो पढ़ा एकदम परफेक्ट है. नहीं, ऐसा नहीं है. टू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स. सो ये 14 डेज है, मैं बता रहा हूँ आपको. आई एम वार्निंग यू, आपका सपना अधूरा रह जाएगा अगर आपने 14 डेज को परफेक्टली यूटिलाइज नहीं किया तो. एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए. आपके स्टडी रूम में अगर आपने कुछ चार्ट्स वार्ट लगा रखे हैं, लिंकिंग चार्ट्स वगैरह, वो तो मुझे लगता है उसको करते हो, बट अपने डायरेक्ट एपिक्स लेके इसको भले फायर भी अपने दीवार को चिपकाना पड़े चिपका दो. मेडिटेट करो उनको, ताकि सेक्शन वहां पे रिकॉल होनी चाहिए, ताकि 6 बॉल में से कोई एक आधी बॉल पे आप बाउंड्री लगा सको. Right, sir. ओके, सो वर्क ऑन दिस थिंग. बस एक लास्ट में एंड करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी. आई ऑब्जर्व इन माई ओपिनियन. आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो और इमीडिएटली ओपिनियन में वर्ड यूज कर रहे हो. ऑब्जर्व इन माई ओपिनियन क्या मतलब निकला इसका? Okay. आपने ऑब्जर्व करने के बाद ओपिनियन दिया ना. Yes. अब यहाँ पे क्या दोगे कि सर आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन माई ओपिनियन सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. Okay. ओके. आपका एलएलबी कौन से कॉलेज से हो रखा है? VT Choksi Law College, Surat. 5 year कोर्स था? No, 3 years, sir. 3 years का कोर्स था. ओके, यस मैम प्लीज, एनीथिंग प्लीज. You are full of confident, but bit on a higher side. थोड़ा सा higher side है. Okay. कुछ चीजें आपने एक्सप्लेन ज्यादा सेंटेंसेस में कर दिया. मतलब इतना टाइम बोर्ड नहीं देगा आपको, इतना लंबा आंसर नहीं करना जिससे वो बोर हो जाए. ठीक है, बी शॉर्ट एंड स्वीट. एक लैंग्वेज जो सर ने बताया, Yes. जो आप बताया come again, that was not at all admissible in interview board. Secondly, okay word. जब हम I mean to say जब interview board आपको समझाए, that time you can say okay. But now answering to a question and saying okay, you want to ask this, okay. So this gesture is not मतलब permissible. Second, thirdly, आप गुजरात से ही हैं? Yes, madam. आपने बब्बर शेर का नाम नहीं सुना हुआ? बब्बर शेर एशियाटिक लायन. जी गेम में वही है जी. मेरे ख्याल से. ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गुजरात के बाहर के बच्चे अगर इंटरव्यू देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप दोगे तो आपसे तो एक्सपेक्टेड है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके मैडम. एक पंचशील पे आपका बहुत स्ट्रेस था थ्रू आउट योर इंटरव्यू. तो पंचशील का उसका लॉ के फील्ड में कहाँ जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए. ओके. शरद बेटलीचंद शारदा वाला केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था. वो मेरे ख्याल से ये बेसिक केस लॉज हैं जो एक मतलब आप उस पॉइंट पे अगर स्ट्रेस आप पंचशील वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बताओ वो लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है जिसने पंचशील का सिद्धांत दिया था. राइट सर. तो वो था आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे मैंने बताया शरद बेटलीचंद शारदा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984. ओके, ये लिखने ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी. रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा देंगे. हमारा बेसिक पर्पस यही है कि आप लोगों को सब कुछ इम्प्रूवमेंट मिले. यस सर. यस यस मैम. दैट्स इट. जो भी स्ट्रेस करे ना उसका थरो करके जाइए आप. जी मैडम. Else you are a suitable candidate, you know. Divyakant Pandya ji, I am telling you. जी मैडम. You are a fit candidate, and in the next 14 days, if you devote yourself for the remaining things, for the meditation of the study, and especially follow the linking meditation. Yes sir. Whenever you are recalling any particular thing, also link it with another provision. It will sharpen your memory. At that particular time, you will recall that particular provision. Right sir. Right. Particular, that's your terminology, है ना? Particular. Okay, so wish you all the very best. आप बिल्कुल जज बने, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, और जज बन के भी संपर्क में रहिएगा. Thank you sir. Thank you. Thank you so much dear.